3 people have lost their lives in the violence that erupted in Murshidabad in West Bengal. Central forces had to be deployed in the area, but the TMC government has seemingly turned a blind eye to the gravity of this incident. In a shocking and a deeply disturbing escalation, a TMC MP has been caught on camera asking people to further commit violence. Listen in. মুর্শিদাবাদে আজকে একটা ছোট্ট সমস্যা সেখানে হয়েছে। সকলের কাছে করজোড়ে অনুরোধ করব, দয়া করে আইন কেউ হাতে তুলে নেবেন না। প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, আপনার বাবা দাদাদের অবস্থান রক্ষা করার দায়িত্ব যেমন আপনাদের তেমন আমাদের সকলের। ওয়াকফ সম্পত্তি কারোর বাপের সম্পত্তি নয়, ওয়াকফ সম্পত্তি একটা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। সেই সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায়, তার চোখ যেমন উগড়ে নেবেন, হাত তেমন ভেঙে দেবেন, একথা নিশ্চিতভাবে আপনাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে বলতে পারি। And here is what happens when provocations like these come from those who are sitting at the top of the ranks in the state, those who are a part of the ruling dispensation. BSF DIG has spoken out about how the crowds that ran rampage on the streets of Murshidabad did not hesitate even once before targeting his soldiers, his security personnel. He says they were attacked with stones, they were attacked with lathis, even petrol bombs were hurled at them. शायद आप घोसपाड़ा वाली जो इंसिडेंट हुआ है उसकी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, वहां लेंस बाय लेंस में हमारे ट्रूप्स गए थे, वहां पे उनके तरफ चारों तरफ से अटैक हुआ था, पेट्रोल बम से, पत्थरों से, लाठियों से। तो ये स्थिति थी। वहां पे नौबत इतनी खराब आई थी कि शायद वहां पे हमें बल प्रयोग करना पड़ा। हमें वहां पे कुछ फायरिंग, लोगों को डराने के लिए और उनको भागने के लिए मजबूर करने के लिए हमने हवा में गोलियां वहां पे चलाई थी। BJP leaders are now demanding action against TMC leader. Sukanta Majumdar says he should be arrested for making such provocative comments. One after one, the TMC leader, it may be this Bapi Haldar or it may be Siddiqullah Chaudhary. They have they have issued this kind of derogative as well as provoking statement. So that's why the incidents like Murshidabad like incidents are happening everywhere. And if something happens in the South Chobis Pargana from where this Bapi Haldar belongs, then he should be responsible for everything. And this type of person should be taken into the custody. This is the vote bank politics, na? That's why Bapi Haldar, I would like to suggest Bapi Haldar, please change your name. You don't have the right to bear a Hindu name. बप्पी हलदार का स्टेटमेंट ये स्पष्ट करता है कि ममता बनर्जी का डायरेक्ट फोन जा चुका है, भले वो सिद्दीकुल्ला चौधरी हो या बप्पी हलदार हो, कि बंगाल के अंदर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे टारगेटेड वायलेंस के पीछे ममता बनर्जी का संरक्षण है। आंखें निकालने देने की बात करने से ये स्पष्ट हो चुका है कि ये जो भी भीड़ सड़क पर आई है, इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस के एमएलएस, तृणमूल कांग्रेस के मंत्री, तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के करीबी लोग मौजूद हैं और इसके पीछे उनका हाथ है। इन सबको संरक्षण ममता बनर्जी द्वारा दिया गया है, क्योंकि ममता बनर्जी बांग्लादेश जैसे हालात बंगाल के अंदर करना चाहती है। What we are witnessing in Bengal is the darkest chapter in the history of Bengal in post-independent India. वक्फ के नाम पर भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर, और ये भड़काओ भाईजान कमेटी पूरा टीएमसी द्वारा प्रायोजित, स्पॉन्सर्ड, प्रोटेक्टेड, एनकरेज्ड है। इसका प्रूफ अब सामने आ चुका है। अब टीएमसी के सांसद बोल रहे वक्फ की प्रॉपर्टी को छुआ तो हाथ तोड़ दूंगा, आंखें नोच लूंगा। इसी प्रकार की हिंसा की जा रही है, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, चुन चुन कर हिंदुओं की दुकान जलाई जा रही है। दास परिवार के 3 सदस्यों को मार दिया गया है। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो तृणमूल कांग्रेस पुलिस को बोल रही है कार्रवाई मत करो। ममता बनर्जी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है और इमामों से मिल रही है। Now concerns are being expressed by UP Chief Minister Yogi Adityanath over the status in West Bengal. He says that lakhs of acres of land across the country have been illegally occupied without papers, and when people who are the rightful owners are now being enabled by a law to stake claim on that land, there is violence that is killing the very same people who are going to be benefited. संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है।
तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा। उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। Now, you heard Yogi Adityanath over there expressing his concern over the matter. Meanwhile, Asaduddin Owaisi and the likes are still continuing to provoke people to say that this law targets them and their rights. He has now called for a rally against the Waqf law. However, he refuses to speak about the damage that has been caused by violence in West Bengal. देखिए, मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ श्योरिटी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये बात करने के लिए आया हूँ और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो, बोल देते आप। Now, while the BJP has been accusing Mamata government of giving a free run to radical elements in the state, TMC is hitting back vehemently. Veteran TMC leader and MP Saugata Roy has blamed troublemakers for infiltrating the state while highlighting that Muslims are upset by the passage of Waqf law. He's dismissing any claims of exodus as well. BJP is a third-class party. They can only talk in communal terms. In Murshidabad, both the Hindus and Muslims are for TMC. There is no fleeing from the area. If there is trouble at any spot, the local administration will take adequate steps. We cannot let the peace in Murshidabad be disturbed by outside forces. Exodus claim is all false. Temporarily something may have happened. In Murshidabad, Hindus and Muslims have always lived in peace. Nothing will be disturbed. রাজনীতি আমি এখন সবাইকে বলবো যে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে নিশ্চিতভাবে কিছু মানুষ আক্রান্ত হয়েছে, অন্যায় হয়েছে, মানুষের সেবায় ব্রত হওয়া, এখানে রাজনীতি করাটা ঠিক না। এখন মানুষের একটা যে যারা আক্রান্ত হয়েছেন তারা হিন্দু আছেন, মুসলমানও আছেন, সব মানুষের পাশেই মানুষের দাঁড়ানো উচিত। মানব ধর্ম তাই বলে। এখন রাজনীতি করার সময় না, পুলিশ প্রশাসন তার জায়গা ঠিক করুক। আমরা রাজ্যের প্রশাসনের উপরে বিশ্বাস রাখছি। দেখুন, যারা ক্রিমিনাল তাদের কাছে তৃণমূলও নয়, সাধারণ মানুষ ক্রিমিনালকে ঠান্ডা করতে পারে পুলিশ এবং পুলিশের সেই কাজ। The shops and houses that were set on fire in Murshidabad over rioters have meant that people there are left without any source of income and scared for their lives and livelihoods both. The district is now simmering with tension, simmering with despair of locals who have lost their houses and their shops. They are waiting for some sort of succor to come from the government, but there hasn't been much coming their way if their claims are to be believed. Times now spoke to traumatized residents of the violence hit Murshidabad. Sources say that so far 150 people have been arrested. Times now is on the ground in Murshidabad, highlighting the plight of Hindu families who came under attack after Friday prayers. We've seen how the family members of Hindus were attacked, their homes were attacked, their shops were attacked, and now
we're seeing how the Hindu families are now escaping. They are fleeing. They have no other option but to flee and to go to safer locations. You see, there are people here who are now taking their children, and with only a few bags and only a few clothing items, they have been forced to vacate their houses and go to a safer place. We've been told that there are some families who are going to the nearby Malda district and also going to places in Jharkhand because their houses have been looted, their shops have been attacked, and there has been reports of arson, and they are all leaving. You can see there are hordes of these families who are being seen leaving this tensed area. It's become extremely volatile, and these people belonging to Hindu families have no other option but to save their life and livelihood. Several families since morning, they're fleeing, they're leaving their homes. Are they doing it to save their lives because state has failed to save them? Exactly. Now there is no state machinery is working here. This government used to say khela have. That day actually played has been done by the miscreant. And now they are moving. DGP has came here and he is working in the empty field. Empty field he is working. Now this anger, this desperation is also spilling onto the streets. There was drama seen in Murshidabad as several residents confronted the policemen, accusing them of not containing the violence that started on Friday evening. The fury was such that they even hit out the local MLA who had come to an affected area to meet the victims. The MLA was not able to get out of his car and had to speed away, as you can see in the visuals that are playing out on your screens. Most of those who left Murshidabad have taken shelter at a relief camp in Malda, where a school has been converted into a makeshift relief camp where over 120 people are taking shelter so far. Men, women, kids and people from all walks of life have taken shelter here. Times Now gets you a report. हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं है, क्या बोलेंगे यार, क्या करेंगे यार, कहाँ जाएंगे यार, क्या खाएंगे। जो था सब तो हमको लूट लिया। तो हमको बोल रहे हैं ये कि तुम्हारा इज्जत दो, हम तुम्हारा पति को भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं हमको। खाने के पानी जो है, पानी इज्जत लूटने की भी बात कर रहे हैं। हाँ, गले में जो है उसको हसुआ बोलते हैं, वो हमको गले में धर कर बोलते हैं जो तुम्हारा इज्जत दो। तो हम बोल रहे हैं जो करना है करो, किंतु हमको जान भिक्षा दो। पैर पकड़ते हैं हम उनको, तो भी हमारा बात नहीं सुनते है। घर को जला दिया, घर को लूट लिया। छोटो 1.5 বছরকার বাচ্চা আছে, গলায় হেসে ধরে আছে। আমাদেরকে বিষ দিয়েছে, জোর মস্তি গায়ে পেট্রোল ঢালছে, দিয়ে বলছে কি তোমরাকে মানে নামও নিশান মিটিয়ে দেবো, হিন্দুর নামও নিশান মিটিয়ে দিব। তো আপনার কি দোষ? আপনি হিন্দু বলেই অত্যাচারটা? হ্যাঁ, হিন্দু বলে আমাদের দোষ হলো যে আমরা হিন্দু আছে, ওখানে রাখবো না, ওদের হিসাবে টাকা রাখবো না। এখানে ঘরের ভিতরে ছিলাম বসে, খাটতলা ঢুকে আর শুধু ভাঙচুর করছে, বাড়ি ঘর খুবই ধাক্কা দিচ্ছে, দিয়ে গ্রিলের ঝাঁপ ভেঙে দিয়েছে, টোটো পুড়িয়ে দিয়েছে, বাড়ি ঘর সবই পুড়িয়ে দিয়েছে। খাট মার आप लोग बिस्तर के नीचे छुपे में थे? ওই খাটের তলা ঢুকেছিলাম আমরা সবাইকে। দিয়ে বাড়ি থেকে টোটো ছিল, একটা টোটোটা তাও পুড়িয়ে দিয়েছে, ঠাটাইছে আর ঝাঁপ ভাঙছে গিরিলা। শালির বাড়িতে আমার তোমার ভাতের আগিয়ে দাও, তোর ভাতের আগিয়ে দাও, আমরা চাটনি করে নিব, তোমার ভাতের আগিয়ে দাও, তোমার ভাতের চাটনি করে নিব, এভাবে করে আমরা গাল দিচ্ছে। মানে আপনার বর? হ্যাঁ, ওকে চাইছে। देखिए, ये बांग्ला भाषा में कह रही है कि उनको लगातार कहा जा रहा था कि वो अपने पति को जो है उनके हाथों में दे दे और उनको हैंडओवर कर दे। কেন এরকম কতগুলো বলছিল? এইভাবে করে খুবই অত্যাচার করছে। যাকে বলো আমরা কথা দিয়ে চলে আসলো, টুকটুকি পুড়ালছে, বাড়িতে কিচ্ছু নাই, বাড়িতে আমরা পড়ার কি পড়বো ওটাও কিছু নাই, বাস এইটুকু জিনিসপত্র। কি জিনিসপত্র আছে? কিছু নাই, শুধু আমার শাশুড়ির একটা কাপড় আছে, শাড়ি আছে, কিছু নেই। Hindu families residing in Murshidabad's Dhulian has fallen victim to the mindless violence that took place on Friday. What we see here are several displaced Hindu families who were residing in Murshidabad's Dhulian area, and approximately 120 people have now left their homes
seeking a save life for themselves and also trying to save their lives. They have all come to Malda's Lalparpur area, and this is the Lalharpur High School, and you can see all the people here. They are residents of Dhulian in Murshidabad, and the only reason that they have come to this district, which is the adjacent district to Murshidabad, is to save their own lives. They've seen how their houses were attacked, their shops were attacked, and they had no other option but to come to a safer place. But now uncertainty looms large as to when they can go back home and whether they will be able to go back home ever or not, because right now they are in this relief camp which has been set up by some people and also the state government. The state government also trying to extend help at this point in time. They are being provided food because when they came here, all they could bring with themselves is only a few couple of clothes and come with their children and their family members, and they're living here since yesterday. But what is more alarming is that more and more people are coming to this relief camp trying to save their lives because they fear that they could be killed in this violent clashes, because we've seen already a father and the son dying in this particular violence. BJP has slammed Mamata Banerjee's government, accusing it of failing to maintain law and order in the state. থামেন দাদা একটু আপনাদের সাথে কিভাবে কি করেছে একটু বলেন। মুসলিমরা আপনাদের সাথে কিভাবে অত্যাচার করেছে একটু বলেন। মুসলিমরা আমাদের উপর খুব অত্যাচার করছে, প্রচুর অত্যাচার, মানে এত অত্যাচার থামায় না। বাড়ি ঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে, আগুন লেগে দিয়েছে, একটু ই করছে আর শক্তিশালী দেখা দিয়েছে, ওরা মারধর করে কাটে ফেল দিচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন আসছে, মাঝে মধ্যে সে পালিয়ে যাচ্ছে, পুলিশ সবাইকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, বাড়ি ঘর সব আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, কিছু নাই বাড়ি ঘর, থাকার মতন জায়গাও নেই, এমন অবস্থা করেছে আমাদের। আপনার বাড়ি? বাড়ি হয়েছে বেদবনা। আপনারা জানেন দোকানে বসেন। ঠিক আছে। So as people are forced to pack their bags and leave their homes after a day of violence, where are the representatives who are supposed to raise their voice for these people? Where is Trinamool Congress MP Derek O'Brien, who is the most vocal spokesperson from the party when it comes to issues, especially those related to human rights? Where is Yusuf Pathan, who is an MP from an area that is very close to Murshidabad? We'll tell you. Yusuf Pathan is busy posting pictures on Instagram where he can be seen relaxing with a cup of tea, while Derek O'Brien is putting out images of how he is enjoying a sumptuous lunch. Now, nobody is grudging these people of their lunch or having a good time or chilling in their houses, but do they really think that this is the image they want to portray in front of the people who have voted them into power, who would at least in times of need expect some sort of sensitivity from these people? Now, Yusuf Pathan is not really the MP of Murshidabad. He is the MP of Behrampur. However, these constituencies are very close to each other. Behrampur is one of the 3 parliamentary constituencies in Murshidabad district, and violence has been reported from Suti, from Dhulia, from Samserganj and other areas which are barely like some 20 to 30 kilometers in a distance, 80 kilometers in fact, pardon me, from Pathan's constituency. बंगाल इज बर्निंग और उसके पीछे ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार पूर्ण तरीके से शामिल है। ये स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट एनकरेज्ड वायलेंस है, टारगेटेड वायलेंस हो रही है हिंदुओं के खिलाफ। अब यूसुफ पठान सांसद है टीएमसी के, चाय की चुस्की ले रहे हैं। बंगाल जल रहा है, ये चाय पी रहे हैं। बंगाल जल रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और यूसुफ पठान चाय में आनंद ढूंढ रहे हैं। ये है टीएमसी। एक तरफ बंगाल में हिंदुओं के साथ प्रताड़ना हो रही है, दूसरी तरफ मिस्टर यूसुफ पठान चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। It's very difficult in times like these for people to repose their faith in representatives who put out images like that. Time for us to take a quick break.